Bismillahirrahmanirrahim. This is Captain Shanmas from Imlaak.com. Welcome everyone. आज का हमारा टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अबाउट ग्रेटेस्ट फूल थ्योरी. अब आप पूछेंगे ग्रेटेस्ट फूल थ्योरी क्या है. बेसिकली हम इसलिए आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग जो 1 करोड़ रुपी चैलेंज हमने रिसेंटली लोगों को बताया था कि इफ़ यू इन्वेस्ट स्मार्ट एंड यू कैन गेन अ लॉट. सो you know, we believe that if you invest 1 crore rupee today smartly, if you save that money and just invest it smartly, you can make a lot of money actually over a period of next 5-10 years. और 10 साल honestly मैं आपको बात बताऊँ 10 साल गुजरने का जो है वो पता भी नहीं चलता with the passage of time. हमारी मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो basically some people don't understand. What happens is they buy on a high and they sell at a low and they keep on repeating their mistakes again and again. जबकि रियल स्टेट मार्केट के अंदर you know there is a theory which is very famous in not just in real estate market but stock markets as well in every places. Greatest full theory basically ये कहती है कि you buy something believing that there is another buyer available in the market who is ready to offer a better price for that commodity, right? इसके अंदर उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल असेसमेंट का जिक्र नहीं है, राइट? सो यू आर बाइंग एंड सेलिंग बिलीविंग दैट देयर इज अ ग्रेटर फूल अवेलेबल इन द मार्केट हु विल बाय दैट थिंग एट अ हायर प्राइस. सो व्हाट हैपेंस दैट थिंग व्हिच प्रोबेबली कॉस्ट, लेट्स सपोज दिस इज अ marker, so this costs 100 rupees or 200 rupees, but because I know or I made the market sentiment as such कि मुझे पता है कि ये 210 रुपये में बिक जाएगा, ये 220 रुपये में बिक जाएगा. मार्केट सेंटिमेंट कैसे मैं कहता हूँ जी ये मार्कर जो है आप बनना बंद हो गए. अब वाइट बोर्ड जो है उसके लिए आपको मार्कर दुनिया में मिलेगा. सो क्या होगा, एक फॉल्स फेक बबल क्रिएट होगा. सो व्हाट हैपेंस, मैंने 200 रुपये में खरीदा, मेरे से एक ने 210 में खरीदा, उससे अगले ने 220 में खरीदा एंड सो ऑन यू नो 400 में चला गया, लेट्स सपोज 600 रुपये का हो गया. और जिसने मैंने जब 200 रुपये खरीदा मैंने 600 रुपये के तो ऊपर ही जा रहे हैं, मैंने दोबारा 600 रुपये का खरीद लिया. बट व्हाट हैपेंस विद दिस बबल्स इज अल्टीमेटली यू नो देयर इज अ लिमिट ऑफ ग्रेटर फूड्स अवेलेबल इन द मार्केट. अल्टीमेटली 600 से ऊपर खरीदने वाला वी विल नॉट फाइंड एनी बायर, सो नो बायर एट दिस प्लेस. सो जब यहाँ पे कोई बायर नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, राइट? मार्केट सेंटिमेंट विल सर्टेनली गो बैक टू नेगेटिव. मार्केट सेंटिमेंट चला जाएगा कि यार ये 600 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और पहले इसकी ओरिजिनल प्राइस वाज 200. सो ना अभी 400 वाला बायर एग्जिस्ट करेगा, ना 600 वाला, ना 220 वाला, ना 210 वाला. सो बिकॉज एक्चुअल असेसमेंट इज लाइक 200. सो होगा ये कि यहाँ से 600 रुपये की चीज़ विल गो बैक 400, यहाँ पे कोई तो बाय कर लेंगे, फिर 250, फिर अल्टीमेटली इट विल क्रैश टू 200 और मे बी 225 or stuff like that, right? Same thing applies in real estate market. ठीक है. The problem is most of the people who trade in the real estate market don't trade on the actual assessment of the properties. यही चीज़ जो है at Imlaak, we're gonna change that. We're gonna start trading at actual assessment of properties, right, rather than investing in bubbles. So first of all, in a 1 crore rupee challenge, please try to understand that this is not a holy grail, right? This is not making money overnight. So this is not overnight money. So you're not going to be rich in like 30 days or 50 days or 60 days. If you want to be rich in 50 days, 60 days, I think you better try your luck with other places like stock exchange or stock markets and stuff. Real estate is not meant for you. So this is the first thing. If you're investing 1 crore rupees, you have to understand this is not an overnight money. Secondly, we will avoid bubbles. We are not in favor of investing in bubbles. अगर आप बहुत सारे लोग who have been reading our articles, तो आपको याद होगा कि हमने फेज 9 प्रिज्म के बारे में कुछ साल 1.5 साल पहले ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि इट्स बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट बबल. उसका रीज़न ये है कि उसकी असेसमेंट जो है दैट वाज नॉट एक्चुअली एज पर द एक्चुअल वैल्यू. प्लॉट प्राइसेस वहाँ पे
1.5 करोड़ रुपए की थी, जबकि 1.5 करोड़ रुपए के अंदर जो है हमें फेज 7 के अंदर बड़ा अच्छा मुनासिब जहाँ पे हम आज घर बना सकते थे वो प्लॉट मिलता था. तो फेज 9 प्रिज्म इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ बबल्स, इन्वेस्टमेंट बबल्स and greatest full theory, because you were buying. A lot of people came to me in that time, and जब मैंने उनको सजेस्ट करता कहते थे देखें जी वो पहले एक 5 था, अब एक 10 हो गया, अब एक 15 हो गया, अब एक 20 हो गया, अब एक 25 में भी जाएगा, ये इसने ऊपर ऊपर जाना है मार्केट का हर बंदा खरीदने का. दैट इज एक्जैक्टली एन एग्जांपल ऑफ ग्रेटेस्ट फुल थ्योरी. समटाइम्स ग्रेटर फुल थ्योरी कंटिन्यू भी करती है, इट्स नॉट ऑलवेज कि ये हर दफा रिवर्स हो जाती है. बट व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू इन इजियर वर्ड्स, दैट you are not sure, ठीक है ना, about future. So fine, I understand. You invest in a bubble and it keeps growing or it keeps stabilizing. अभी भी 9 prism जो है वो इतना उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आया, तो क्या होगा आगे फ्यूचर में जाके, right? So that is a very important question. Problem ये है इस सारी सिचुएशन के साथ, you're not sure of the future. Right? This is very important. कोई पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स, किसी किस्म की चीज़ एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर किसी तरह का इकोनॉमिक कोलैप्स 2008 के अंदर आया था, उस तरह की जैसे ही कोई सिचुएशन होगी तो जिस चीज़ जो बबल के अंदर है दैट विल लूज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. जो जेन्युइन प्रॉपर्टी असेसमेंट असेस्ड प्रॉपर्टीज़ है जैसे फेज 8 है, फेज 6 है, उनके अंदर अगर कोई किसी किस्म का डिप्रेशन आएगा भी तो 10, 15, 20% के अंदर अपने आप को दे विल बी एबल टू कवर अप. लेकिन जो बबल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं वो 50%, 60%, 40% तक भी गिर सकती हैं. एंड दैट मीन्स दैट यू आर रिस्किंग अ लॉट मोर इन्वेस्टिंग इन अ बबल. And because you and me or everyone else doesn't know about the future, so it's really not advisable to invest in future. और हम अपना जो 1 करोड़ रुपये चैलेंज कर रहे हैं, we are telling you we are going to avoid all kind of investment bubbles. We are not going to go in them, and we're never going to invest in them. And nor do we suggest or advise our clients or our friends to invest anywhere, anytime in an investment bubble, because they are too risky and things are simply unpredictable. I hope this covers one of the major topics, and inshallah ta'ala we'll see you soon. For now, goodbye and Allah Hafiz.